अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की जो क्विज़ नंबर 1 है बैच नंबर 6 की उसको सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 19 नवंबर 2023 है। वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्विज़ को लेते हैं जी। स्टार्ट क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इज़ टू improve the decision making process, reduce the risk of bottlenecks, make it easy to access the information, और all of these। तो ये जो है improve the decision making process, this one इसको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट फंक्शन डिस्प्ले raw data in a column or column data in a raw? Hyperlink, index, transpose और row? What function display raw data in a column? तो इसको हम लास्ट वाले को करते हैं rows। सेव एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बिजनेस इंटेलिजेंस इज़ यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, यूज ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, और नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या करेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस इज़ यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये थर्ड वाला करते हैं जी। सेव एंड नेक्स्ट। A single spreadsheet document is often called a insert, shareware, worksheet, कहते हैं इसको। सेव एंड मूव नेक्स्ट। गूगल मैपिंग सर्विस यूज स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, none of these। data analytics। Which of the following is not a statistical function? Average if, max, count if? Which of the following is not a statistical function? Max, count if। ये लास्ट वाला कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज यू सेंड आउट ए फॉर्म टू अदर फॉर कलेक्टिंग द response. If you choose new Google form option for collecting the response, then which of the following option can be used as the storage destination? New spreadsheet, enter an existing spreadsheet, new sheet in an existing spreadsheet, न्यू स्प्रेडशीट इंटर। ये इसमें नया फॉर्म होता है वो, तो इसमें ये नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वाइल यूजिंग गूगल ऑफिस कंपोनेंट वन मस्ट हैव जीमेल अकाउंट, हॉटमेल अकाउंट, याहू अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो जीमेल अकाउंट ज़रूरी है जी, ये तो 100% श्योर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, which of the following function is best suited to add number based on some condition?
sum if, count if. Which of the following are best suited to add number? Count if or count if? Count if last वाला. Question number 10 है gender in male female form is a quantitative data, qualitative data, categorical data और तीसरा all. तो क्वांटिटेटिव में नंबर होते हैं और मेल और फीमेल क्वालिटेटिव डेटा, तो इसका सेकंड वाला बेस्ट है. अब हम देखते हैं कि हमारे कितने सही हैं. तो इसमें से 5 सही हैं और 5 गलत हैं. तो ये आप देख लीजिएगा. तो इतनी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई, काफ़ी मेहनत की, लेकिन ये थ्योरी इसकी काफ़ी मुश्किल है. तो एनीवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.